इंडिया रैंक सेकंड इन पेटेंट फाइलिंग। तो भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी दिख रही है मित्रों, जिसमें भारत सेकंड पोजीशन पे दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनल डिसीजन ऑफ द पेटेंट्स। देन नेक्स्ट इज द फैक्ट्स फॉर योर प्रिलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। वैसी चीज़ें जो आपके प्रिलिम्स और मेंस में आएंगी। सो इंडिया shows a highest growth of 50% of GDP in services, 50% rise, and it is forecasted to grow by 8.2% in 2021-2022. Remember this data, 8.2% का forecast किया गया है GDP और GVA growth के लिए 8.2% that is forecasting, and India is the largest recipient of FDI in terms of service sector. Remember this fact again. Then according to World Investment Report 2020 UNACTAD, India was the 5th largest receiver of the FDI in post-pandemic period and improved the rank of 4 places from 9th position earlier in 2019. तो 9th पोजीशन से इंडिया 5th पोजीशन पे आ गया है इन टर्म्स ऑफ एफडीआई। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स वाज एडेड 2020 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, यू पीपल हु आर गोइंग टू परचेज सर्टेन गुड्स कमोडिटीज आइटम्स इन द मार्केट। तो उनके लिए, आप सभी लोगों के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल बना दिया गया for all the e-commerce retailers, यानी कि Amazon, Flipkart, Myntra। तो इसके लिए हमने जो रूल्स बना दिए गए उसमें क्या हुआ, इंडिया, if a retailer is there whether he is in India or abroad, कोई भी e-commerce retailer भारत में है या भारत के बाहर है, he has to have a mandatory nodal office in India। उसका एक mandatory nodal office होगा जिसमें एक nodal officer होगा which will inquire all the things which being sold by that e-commerce entity in the market in terms of authenticity, credibility, transparency, quality of the product and the tax payment data. So there will be a nodal person first will be the resident of India। कोई भी entity होगी उसका जो nodal officer होगा will be an Indian person। Remember this fact to ensure compliance with the provision of the act and rules. The sellers through e-commerce entities will have to display the total price of the goods and services as well as the expiry date। तो उन्हें गुड्स का टोटल प्राइस शो करना होगा। ही कैन नॉट हाइड दी टैक्सेस दैट इंक्लूडेड दैन डिस्काउंट्स दैट वेयर टेकन। सो टोटल प्राइसेस शुड बी हाईलाइटेड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल। एक्सपायरी डेट इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन और एनी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट सेपरेटली। रिमेंबर दिस फैक्ट। नाउ marketplace as well as sellers need to appoint a grievance office. So if a consumer is having certain trouble with a product, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, grievance redressal mechanism। जनहित याचिका दायर करके आप grievance redressal करते हैं by filing a PIL। Then it makes the essential and the mandatory rule that e-commerce entity यानी कि Amazon, Flipkart, Myntra and such entities should have a e-commerce nodal agency officer। And according to the World Tourism Barometer of United Nations World Tourism Organization WTO का World Tourism Barometer क्या बता रहा है, that is January 2021 international tourist arrivals ITA declined by 74% globally to a level of low consumer confidence and a global struggle to contain the COVID-19 spread। COVID-19 spread को curtail करने के लिए low consumer confidence था। Now India has record number of
स्टार्टअप्स। इंडिया के कितने स्टार्टअप हैं? 44, विच रिच यूनिकॉर्न दैट इज 1 बिलियन यूएस डॉलर का कैपिटल उनमें पाया गया। इट ओवरटुक यूके दैट इज इंग्लैंड टू इमर्ज एज द थर्ड हाईएस्ट कंट्री इन नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो इंडिया ने अमेरिका दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना के बाद थर्ड नंबर पे स्टार्टअप्स की संख्या शो की है मित्रों, याद रखें इसे फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। एंड एज ऑफ January 14, 2022, India has 83 unicorns with a total gross of $277.7 billion। आप देख रहे हैं मित्रों, 44 की संख्या पहले थी, now it grows to a number of 83 on 14th January when this data was taken for the economy survey। तो इकोनॉमी सर्वे का डेटा क्या बता रहा है? राइजिंग इन द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स to a number of 83। तो $1 बिलियन से हाई संख्या पे जा रहे हैं, वो 83 स्टार्टअप्स हो गए और दे आर ग्रॉसिंग अराउंड $277.77 बिलियन यूएस डॉलर। ओके फ्रेंड्स, नाउ ट्रांसपोर्ट बबल एग्रीमेंट। सो इंडिया हैज ट्रांसपोर्ट बबल्स with 35 nations, in which what is transport bubble agreement? Again I am saying that when one country, say India, is having certain passengers in the COVID lockdown trap, then 14 days quarantine period was set। in terms of transport क्या हो रहा है मित्रों? कोई भी goods किसी भी country में manufacture हो रहे हैं, say in Japan और in Singapore, तो transport bubble होने से क्या है? that country without going through too much restrictions of trade and rules and regulation, they can directly transport the goods to the Indian market। तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में without going through much constraining restrictions, if a good is delivered, that is called as a transport bubble। तो इंडिया 35 nations के साथ transport bubble है, that is अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, फिनलैंड, जर्मनी, ईरान, जापान, कजाकिस्तान, केन्या, कुवैत, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, नीदरलैंड, कतर, ओमान, नाइजीरिया, रशिया, रवांडा, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, सिंगापुर, सेशल्स, यूक्रेन, यूएई, यूके, यूएसए एंड उज्बेकिस्तान। सो इंडिया इज हैविंग 35 nations transport bubble agreement। That means there is no much hurdle of clearance of rules and regulations at the airports। यानी कि कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी में फंस जाते थे पहले बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स, उसको क्लियर कर देगा ये ट्रांसपोर्ट बबल एग्रीमेंट दैट विल ईज द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द कस्टम्स एंड द transportation from airways। That makes again very important fact for prelims and mains। Now Vande Bharat mission, we saw that India sought a Vande Bharat mission with various countries such as Afghanistan, Nepal, in which direct flight was sent to those nations to take back the people of India directly to our territory with 14 days of lockdown in that territory only। So that was again a part of air bubble situation। That is again a air bubble। So Vande Bharat mission, under which biggest evacuation exercise of Indian citizens started abroad amidst the COVID-induced travel restrictions। And further, Indian Navy has also launched Operation Samudra Setu। Remember friends, Samudra Setu, that is sea bridge by Indian Navy। तो इंडियन नेवी ने क्या किया है? समुद्र सेतु लॉन्च किया टू repatriate Indian citizens from overseas। INS Jalashwa, which INS? INS Jalashwa and INS Magar। So दो जहाज भारत के INS Jalashwa, INS Magar, being operated as a part of efforts to
repatriate Indian nationals from foreign shores. विदेशी सीमाओं में जो भारत के लोग फंसे हुए थे, सच एज इन ओमान, इन कतार, ईरान, देयर वेर 2 ships, दैट वाज INS जलस्व और INS मगर, इन्हें भेज के भारत के नागरिकों को वापस लाया गया इन द लॉकडाउन सिचुएशन. देन देयर वाज rescue missions such as Operation Rahat with Indian Armed Forces from Yemen. So यमन में जा करके भारतीय आर्मी ने जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने का प्रयत्न किया. That was under Operation Rahat in Yemen by Indian Army. ऐसे फैक्ट्स आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं and various state examination also. During 2015 Yemen crisis and the evacuation take place both sea and the air. So at the ocean level there was Operation Rahat as well as the airways also. Then second was Operation Maitri. Maitri operation was to rescue and rehabilitate the carried out the government of India and Indian armed forces in aftermath of the नेपाल अर्थक्वेक. तो नेपाल अर्थक्वेक में ऑपरेशन मैत्री के द्वारा नेपाल के लोगों को इंडियन आर्मी ने बचाया. दैट वाज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन मैत्री. देन देयर वाज ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, सुरक्षित घर वापसी. इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन February 2011 टू इवैक्यूएट सिटीजन्स फ्लीइंग फ्रॉम द लीबियन सिविल वॉर. लीबिया में जो लोग फंसे हुए थे और सिविल वॉर लीबिया में चल रहा था, तो हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के जवानों को वहाँ पे एयरवेज से भेजा और इंडियन सिटीजन्स को वापस लाया गया इन अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन सेफ होम कमिंग. देन अगेन ऑपरेशन सुकून विच वॉज carried out by Indian Navy in Sri Lanka. Sri Lankan and the Nepalese nationals set in the Lebanon war. So Lebanon war जो चल रहा था उसमें ऑपरेशन सुकून लाया गया था by Indian Navy. Remember this fact all for your prelims as well as mains examination. So you can add this data in paper 3 syllabus when you are writing the questions on the security issue. Whenever UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछती है, what were the operations taken by India in aftermath of or in previous stage or before the pandemic situation, what operations were carried out by Indian armed forces and Indian defense sector to evacuate the Indian citizens. And in paper 2 it can also be asked that elaborate and explain the measures taken by Indian government to evacuate the people and support the neighboring nations as well as the allies countries in the crisis situation. So you can quote this answer and facts in your answers to make your answer more mark fetching. Now the purchasing managers index PMI index शो करता है that is manufacturing and service sector में जो भी growth हो रहे हैं or declination, that is shown by PMI index in terms of manufacturing and services. Then the IHS Market India Services, which also tracks the variables such as sales, employment, inventories and prices. So ISS India or PMI that are taking the account of रोजगार जनरेशन, सेल्स होना, इन्वेंटरीज जो भी गुड्स कलेक्ट हुए हैं सेलिंग के लिए एंड प्राइसेस ऑफ सर्टेन कमोडिटीज. तो IHS उस पर डेटा ले रहा है. नाउ मोस्ट कॉमन PMI सर्विस and manufacturing PMI shows that the understanding of the investor in the market in the pandemic and post pandemic situation. PMI indicates करता है कि कंज्यूमर्स की कॉन्फिडेंस किस चीज़ पे ज़्यादा है, सेंटिमेंट्स उनके कहाँ जुड़े हुए हैं, वो क्या चीज़ें ज़्यादा परचेज कर रहे हैं in terms of goods and services.
So it shows the better understanding and collects valuable information about the economic backdrop of various markets. IHS India Service Business Activity Index improved from rose of 52.8% in January to 52.3 in December. ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है IHS इंडेक्स में 52.8% का. PMI is a number from 0 to 100. Purchasing Managers Index 0 to 100 में इंडिया को 52.8 पे रख रहा है. Now PMI above 50 represents the expansion. इंडिया का रैंक कितना 52.8. It means it is above 50 and it shows the expansion when compared to the previous month. Now comparing to the monthly consumption pattern and behavior of the consumers in the market, PMI indicates that Indian market is quite confident about the consumption pattern. So when there is demand and there is supply and there is consumption, so growth depends largely on the consumption of the product. Manufacturing हो रही है, MSMEs से, FDI से, कहीं से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उनकी सेलिंग होनी चाहिए. दैट मीन्स इफ कंजम्पशन लेवल इज गुड देन द कॉन्फिडेंस ऑफ द इकोनॉमी इज क्वाइट गुड. फ्रेंड्स, रिमेंबर दिस डेटा. एंड PMI अंडर 50 रिप्रेजेंट्स द कॉन्ट्रैक्शन. तो अगर PMI, इट मीन्स दैट PMI is greater than 50, that means confidence in the market and consumption pattern. Second, when PMI index is less than 50, it means the market lacks the confidence of consumer. Lacking confidence of consumer. तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे? प्रोडक्शन करना रिड्यूस कर देंगे, कम पैदा करेंगे अपने गुड्स और कमोडिटीज को. नाउ अ रीडिंग एट 50 इंडिकेट्स नो चेंज. इफ PMI इक्वल्स टू 50, थर्ड केस, व्हेन PMI इक्वल्स टू 50 देन नो चेंज. दैट मीन्स द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इज एट द सेम लेवल. जैसे पहले चल रही थी कंजम्पशन वैसे ही चल रही है. जैसे प्रोडक्शन इनिशियल स्टेज में थी वही प्रोडक्शन अभी भी चलते रहेगी. नाउ द PMI ऑफ द प्रीवियस मंथ इज हायर देन द प्रीवियस PMI ऑफ द करेंट मंथ. यानी कि जब इकोनॉमी सर्वे प्रिंट हो रहा है उस मंथ में, इन मंथ ऑफ जनवरी, द PMI इज लेस देन द मंथ ऑफ जनवरी दिसंबर. दैट मीन्स दिसंबर में कंज्यूमर की सेंटिमेंट्स ज़्यादा जुड़ी हुई थी, वो ज़्यादा परचेजिंग कर रही थी. जनवरी में परचेजिंग रिड्यूस्ड हो गई है. एंड इट रिप्रेजेंट दैट द इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्टिंग. अगेन वार्निंग सिचुएशन फॉर इंडिया. इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, लोग चीज़ों को परचेज नहीं कर रहे हैं. नाउ सो हियर आर सर्टेन क्वेश्चंस फॉर योर UPSC मेंस एग्जामिनेशन which can be asked for UPSC and state public services and other competitive exams. So first is, over last year a number of policy initiative has been undertaken to drive innovation, technology adaptation and in service sectors. सर्विस सेक्टर में इनोवेशन लाया गया है जिससे कि सर्विस सेक्टर ग्रोथ करते हुए दिख रहा है. So while highlighting such initiative, explain how far such policy initiative can drive the service sector in India. ऐसी जो policy initiative ली गई है, how far that can drive to the growth of Indian economy. You can write in the introduction part that what is the current situation of Indian economy in post-pandemic, how it is making the recovery, and also elaborate that contact and non-contact based service sectors are doing in different parameters. So non-contact based service sector are doing quite well in the pandemic situation. So still government is making e-commerce rule, which again shows the credibility and authenticity of the non-contact sectors, which can lead to rise of the Indian economy. Use this part in your body and conclude very well that Indian economy is future forecasting in terms of e-retail sale,
and in terms of every sellable items that can lead to high productivity and consumption led growth. Second question is, the space industry has ability to foster the thriving ecosystem of entrepreneurs and private business as well as entrepreneurs. So space industries in which we are having two new modules. So critically analyze the statement while justifying why it is the right time for Indian startups to enter the space sector. Now it is asking question in two ways. First, you must discuss how the startups are performing. Second, discuss the importance of a space sector economy. आप देख रहे हैं continuously how Elon Musk and the SpaceX companies perform quite well in space sector, taking more and more leap via investment and catering the needs of various private sector for space information. So Indian companies can also use the data in order to fulfill the needs of such sectors. In terms of the colleges and engineering sector, avionics is doing quite well. We are also having the new drone rules to develop the market strategy. So start your introduction with stating that how the space sector is important for the overall growth of space economy, and second, write how India is contributing in the space sector by making new rules, regulations, and how Indian students present in various technical universities are doing quite well. Then also elaborate the rules, regulations formulated by Government of India for space sector. Then conclude with giving a futuristic rules, that how Mars mission is successful, Chandrayaan mission is launched, then drones are used for mapping of drought prone areas, then flood affected areas, in forest areas, northeastern region which are not penetrable by the government. So drones are being used in such areas, geospatial mapping and data collection. In this way you can justify your answer very carefully, because this is critically analyze, है ना, समालोचनात्मक अध्ययन करिए. And third question is, India's research and development R&D region has so far become successful in paving the way for India's knowledge based economy. Critically analyze the statement while highlighting the key issues and possible initiative to be taken in the research and development sector. So taking the example of various sectors which are under research and development phase, start your answer by quoting the various facts of research and development modules done by Government of India. Then also provide certain examples which are being taken part in R&D in terms of manufacturing of cell phones, then in drone activities, R&D in patents, then in service sectors, and in modem, ICs development, microcontroller, microprocessors. Conclude your answer by showing a futuristic mode, then how this R&D can be more precisely used for the development of countries' valuable brain chain, that is technocrats which are engaged in production and startup sectors. So conclude very well and write all these pros, and also mention the issues with these sectors so far in terms of R&D. So in this way, I believe this session of economy survey has been quite useful and productive for your classes. Add this data and facts in your answer writing as well as essay point of view. So I believe you get lots of facts and figure. Looking best for your next class. I end this session. So thank you and have a nice day. Do well for your exams. Jai Hind, Jai Bharat.